Assalamu alaikum. I am your English teacher of class 3rd. We have completed our first chapter. Now we are going to start chapter number 2 from page number 8. This is our 5th lecture. The title of this chapter is The Kids Club. I am reading this chapter. Listen to me very carefully and repeat after me. Kamran, Alina and Wasim lived in Al-Karam apartments. It had 12 floors. More than 100 people lived in the building. There was no place to play except for the staircase. Alina did not like the staircase. It was dark and dirty. But Kamran said, "It's the best place to play. Come, I will show you how to have fun." The children took the lift to the top floor. Then Kamran whispered, "Come on, get busy. Everybody ring a bell and run." "Ring a bell?" asked Alina. "What for?" "To see the fun," Kamran replied. "Come on." He pushed her towards the stairs. "Start running or they will catch you." They pressed the buttons of the doorbells of 3 flats and ran down the stairs. 6th floor below, they stopped to listen to the uproar of angry voices. "What's going on here?" said a person. "Who rang the bell?" shouted another voice. "Wait till I catch you," a voice said. "Wait till I catch you," Wasim repeated. "This is the best game I have ever played," Kamran said. "Come on, let us do it again." The children did it again and again. For 1 week, they never got caught. Then one day, they rang the bell of a flat on the 8th floor. Suddenly, the door opened and an old man stood in front of them. "What do you think this is?" he asked quietly. "Fun?" Alina stared at him. Her heart raced. She turned and ran down the stairs with Wasim and Kamran close behind. Kamran slipped and hit his leg against the railing. "Oh, my leg, my leg!" Kamran cried out with pain. "Come on, get up, Kamran," Wasim pleaded. "I can hear the footsteps. The old man is coming down." "You run," Kamran moaned. "I can't move." "We aren't leaving you," said Alina, but she felt scared when she heard the footsteps. Fearfully, she looked up at the old man. He stood shaking his head as he muttered, "You naughty children, running down the steps like this? You could have killed yourselves." Then he bent over Kamran and felt his leg. "It's all right," he said gently. "No bones are broken, just a cut. Come with me, I'll bandage it." The children followed the old man to his flat. "Come in, children," he said. "I am Shakil." "We are very sorry, sir." All 3 of them spoke together. "Well, that's all right, kids. Now that you have known you were doing something wrong," said Mr. Shakil. He started bandaging Kamran's leg. "Let's be friends. Call me Shakil uncle," he said and smiled. "There's no place for us to play, Shakil uncle," Alina said. Shakil uncle patted her cheek. "I have an idea," he said. "Since I live alone, I have a spare room. We can form a kids club in it. Then all the building kids can meet here and do whatever they like, except mischief," said Shakil uncle with a twinkle in his eye. Now underline the difficult words and write their meanings. Except, ilawa. Staircase, zina. Whispered, सरगोशी करना या कान में बोलना. Pushed, धक्का देना. Stairs, सीढ़ियाँ. Caught, पकड़ लिया या पकड़े गए. Stood, खड़े हुए. In front of, सामने.
स्टेयर्ड घूरना, प्लीडेड इल्तिजा करना, मोन्ड रोते हुए या दर्द से कर रहना, स्केयर्ड खौफजदा, मटर्ड मिनमिनाना या बड़बड़ाना या मुंह मुंह में बोलना, बेंट घुटनों के बल बैठना, मिस्चीफ शरारत, ट्विंकल इन हिज आई आंखों में चमक. Now I am going to explain this chapter in Urdu. This is very interesting story. I hope you will enjoy. The title is Kids Club. बच्चों का क्लब. कामरान, अलीना और वसीम अलकरम अपार्टमेंट में रहते थे. इसमें 100 से ज़्यादा लोग थे. वहाँ खेलने की कोई जगह नहीं थी सिवाय जीने के. लेकिन अलीना को जीने में खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वो बहुत गंदा था और उसमें अंधेरा था. लेकिन कामरान बहुत शरारती था. उसने अपने दोस्तों से कहा कि उसके पास एक बेहतर जगह है जहाँ पर वो खेल सकते हैं. वो अपने दोस्तों से कहता है, चलो मैं दिखाता हूँ कि मज़े कैसे करते हैं. बच्चे लिफ्ट को सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर ले गए. कामरान ने सरगोशी की और कहा, जल्दी करो, सब मसरूफ़ हैं, हर कोई बेल बजाकर भाग जाए. अलीना ने कहा, बेल बजाकर किस लिए? मज़ा देखने के लिए. कामरान ने कहा, जल्दी करो. कामरान ने अलीना को आगे की तरफ धक्का दिया. भागो नहीं तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे. 3 दरवाज़ों की बेल बजाकर वो लोग भाग गए. 6th फ्लोर पर आकर वो रुक गए. घरों से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनने लगे. कोई बोल रहा था, क्या हो रहा है यहाँ? कौन बेल बजा रहा है? रुको ज़रा, अभी पकड़ता हूँ. वसीम आवाज़ों को दोहराता हुआ खुश हो रहा था. कामरान ने कहा, ये सबसे अच्छा गेम है जो मैंने पहले कभी नहीं खेला, चलो दोबारा खेलते हैं. 1 हफ्ते तक ये बच्चे यही गेम खेलते रहे. एक दिन 8th फ्लोर पर अचानक बेल बजाते ही एक आदमी ने दरवाज़ा खोल दिया जो बच्चों के सामने ही खड़ा था. उन्होंने बच्चों से आराम से पूछा, आप क्या समझते हो, क्या है ये सब? क्या ये है मज़ा? अलीना गौर से आदमी को देखती है और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है. वो भागकर सीढ़ियाँ उतरती है. उसके साथ वसीम भी भागता है. कामरान इनके पीछे होता है. कामरान गिर जाता है और उसकी टांग रेलिंग से टकरा जाती है. वह चीखता है, मेरी टांग, मेरी टांग. वसीम कामरान से कहता है, उठो कामरान, जल्दी करो, मुझे पैरों की आवाज़ आ रही है, वो यहीं आ रहे हैं. कामरान रोते हुए कहता है, तुम भागो, मैं नहीं चल सकता. अलीना ने कहा, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे. लेकिन वो डर भी रही होती है. डरते डरते अलीना ने आदमी को देखा. वो खड़े सर हिला रहे थे. शरारती बच्चों, इस तरह नीचे उतरते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे. वो कामरान के सामने बैठे और उसकी टांग देखी. घबराने की बात नहीं, सिर्फ छोटा सा कट है. वो बच्चों को अपने घर ले गए. उन्होंने कहा, मेरा नाम शकील है, आप लोग मुझे शकील अंकल बोल सकते हैं. सब बच्चों ने उनसे सॉरी कहा. उन्होंने कहा, आप लोगों को एहसास है कि आप लोगों ने जो किया गलत किया, इसलिए कोई बात नहीं. फिर उन्होंने कामरान की बैंडेज की. चलो आज से हम दोस्त हैं. अलीना ने कहा, हमारे खेलने की यहाँ कोई जगह नहीं है शकील अंकल. शकील अंकल ने प्यार से इसके गाल पर थपकी दी और कहा, मेरे पास एक आइडिया है. मैं अकेला रहता हूँ और मेरा एक कमरा फालतू है. तुम इसे किड्स क्लब बना सकते हो. फिर वहाँ बिल्डिंग के तमाम बच्चे आकर आराम से खेल सकेंगे, मिल सकेंगे और जो चाहे वो कर सकेंगे सिवाय शरारत के. शकील अंकल ने आंखों में चमक लाते हुए कहा, The story teaches a great lesson to the children that they should not play pranks on others. हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों का मजाक नहीं बनाना चाहिए. और they will also learn that if they try to do harm to others, they may harm themselves. और हमें दूसरा सबक ये मिलता है कि अगर हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो हम अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं. Now let's promise that we will never harm and prank on others. This is the end of today's lecture. I hope you all enjoy. Thank you. Allah Hafiz.